And we are back with the second game of the night here in DHA EME. A big game, Strikers versus the KR Firecummer with the new ball. And what a start that is for the Strikers. Starting off with a boundary. This is a good battle between Firecummer and Abbas Raza Khan. The Strikers need to win this one. The KR need to win this one. Another good delivery, but nicely played by Abbas Raza Khan towards the offside. Raja Uzair is the one who is partnering Abbas Raza Khan. Firecummer with his third delivery now, running in to Raja Uzair. Firecummer to Abbas Raza Khan this time. Gets a fainted edge there. He has placed a fielder there. But a misfield, and that goes for another boundary. So we have Umar with us in the commentary box instead of Hamza Bela for this game. Thank you, Zamir, for having me. Fine start to the match. Very aggressive approach by Abbas Raza Khan, just the way he plays. An excellent ball to end the over. A good start, 10 runs coming off it. Abbas will be pleased with this over, Faiz not so much. Absolutely, and now they're bringing in Murad Shahid to break the shackles. So a very experienced new ball pair here with Firecummer and Murad Shahid. Absolutely, Damir. The kind of bowling pair that you'd want in every team, to be sure. Especially on a track that is good for fast bowling. But this one's a little bit different, more favorable to spinners, I would say. We've already seen a very low scoring match the previous game. So we'll hope this is a bit more exciting for the viewers and for ourselves as well. Absolutely. Big guns playing against each other. They've been playing together for a long time as well, so that internal rivalry / friendship comes out. Murad Shahid starting his spell to Raja Uzair. Raja Uzair places it beautifully towards the offside for a single. Absolutely. It will be exciting to see how Abbas Raza Khan handles Murad Shahid's variation in pace, because he's generally very comfortable with the ball coming in fast, but Murad Shahid is very smart in terms of pace variation. And very, very particular with his line and length as well. And he's got him, just as we were talking about that it would be a difficult contest, and Murad Shahid gets the better of him. First blood. Abbas Raza Khan walking back to his dugout. He came out to open. Murad Shahid got him. With a beautiful delivery there, Abbas Raza Khan scoring 9 of 5 deliveries. Absolutely. Experience coming in, and Knight Riders will be very happy with this start, having seen the back of Abbas Raza Khan early in the innings. Who will we see coming out of that Strikers dugout? Very interesting. In fact, Abdullah Faiz, as far as I can see, has walked in. So another capable batsman for sure. Definitely, but having seen most of the previous match, because I saw that both the teams had come in around the 10th over mark of the previous match, and both of them had seen how the pitch was behaving. So you can't go all in on such a pitch. You probably have to pace your attack. Perhaps I personally feel, Damir, maybe you can give your opinion on this as well, that on such a wicket,
a 50 on 30, 35 balls from one of the starting duo would be very, very beneficial for the matchup. You're absolutely right. I think this pitch is more of a conventional batting pitch, not that going out and just slashing left, right, and center. So we will see a good partnership. We will have to see a good partnership if the strikers need to score a bit more. Absolutely. Let's see how Abdullah Faiz goes about his innings. He's generally more of an aggressive batsman, but with so much experience, you probably make the adjustment that is needed. I think this is the strikers lineup. Too many aggressors amongst them. Murad Shahid runs in for his third delivery this time. Smartly placed by Abdullah Faiz again, but the fielder is there. So nothing more than a single. And I think Raja Uzair will have to take some responsibility and build the innings from here. Yes, Raja Uzair needs to play one of his, slow-paced, composed knocks over here to go about things. That's a good shot, but not timed right from the center of the bat, and it'll just get him one. So a good connection there for Raja Uzair. That would be promising for him. Absolutely, Damir, but I would say the right connection, because a bit more of connection would have probably landed the ball in the hands of the fielder. Murad Shahid now for his last delivery of his first over. Smartly played for one more run. I think that's the approach that you should be taking on such a wicket. You should probably be building your innings with the ones and twos to start with, the odd boundary rather than going for an aggressive shot, because it's a difficult pitch to play on, and you need to play yourself in before you play your good shots. Just like we saw how Musa made it in the last innings, how he took his time till he unleashed in the last over, waited for the bonus to be in play, and then went all in. So that kind of approach is necessary for the strikers as well, I feel. Also something like Mia Manan did as well. Absolutely. Built his innings and a sensational innings to end the game. Absolutely. Manan, it was all Manan, to be honest, with the bat, with the ball. So he's a very complete player, and he showed why he's one of the biggest picks in the league. So Faiz Qamar is back on. Bowling to Abdullah Faiz, a really good delivery. Abdullah Faiz picked it off his pads. Yes. Very, very smart bowling. Faiz Qamar realizing that you need to vary your pace on such a track, and belters or short balls might not do the trick over there. And this is something we expect from, and a pickup shot towards the straight. A good shot. The fielder couldn't really cover it. Good boundary scored by Raja Uzair. And this is what he needs to do. Absolutely. Very beautiful, risk-free shots, the way they should be played. There is no shot better than a straight shot again by the bat. Faiz Qamar now for his third delivery. Running in, Raja Uzair uses his feet, nudges it towards the leg side, pushing for the second, and that's really good running. Yes. Very comfortable. Are they looking for the third now? No, they're not. They've settled for two. Faiz would probably not be very happy right now. He would be eager to get a wicket to bring his play back and to get back into his mojo. He is a bit expensive so far by the standards he set for himself. Absolutely, and that's a beautiful ball, but excellently washed right under his eyes, and just a single. So not giving Faiz much to do over here, handling him very professionally. Faiz with his last delivery of this over to Abdullah Faiz. This time outside offside. Nudge towards the third man yet again, and another single for them. Very mature from Abdullah Faiz, just rotating the strike while Raja Uzair is playing the partial aggressive role, and that's exactly how it should be done on such a wicket. So really good batting so far. Strikers are 23 for 1 after 3. Faiz Qamar giving away 19 in his first two. Not the usual Faiz Qamar where
experiencing. Absolutely. Well, then everyone has a bad day, and so far it's a bad day, but there's still a lot of day left to make up for the first two not so 5 overs. Murad Shahid is back again after getting a wicket off Abbas Raza Khan. Another good delivery, keeping it simple. That's very, very smart bowling by Murad Shahid. The experience always comes into play and shows in a player when you observe closely. And this is all experience from Murad Shahid. Murad Shahid now to Raja Uzair. Runs in once again. Raja Uzair uses his feet, picks it up. What a shot that is over the mid-on region. A sensational connection. He got the elevation, got the distance. Absolutely, that's raw power, I would say. Fetching it outside from like the sixth stump and dismantling it over the long on boundary. Huge six. Huge six, and the connection, I mean, that was so sweet. That's the beauty of hardball cricket, that when you connect from the middle of the bat, you know that it's going. Raja is not very happy with the field and making the adjustments. Let's see how he redeems himself back on the next ball. So he runs in once again. Raja Uzair uses his feet, and that's really smart batting by Raja Uzair. Very smart. He knows that Murad Shahid is nippy, he might bring the ball back in. So he's basically playing all his balls from the fourth stump, absolutely ruling out the chance for any impact in terms of an LBW call. Murad Shahid to Abdullah Faiz now. And this time played towards the offside. He is pushing for the second. It's an excellent cover drive, but excellent fielding, keeping it to just one. Murad Shahid now with his last delivery of this over to Raja Uzair. Raja Uzair, who is looking really good out there. Murad Shahid runs in once again. He uses his feet towards the leg side. Huge hit and another six, I feel. Yes, absolutely. That is an onslaught from Raja Uzair. The pitch isn't looking the way it was in the last match, at least. That's how he's batting. Absolutely. Raja Uzair is just dismantled Murad Shahid in that over. Absolutely. He looks like in another zone, like he's made his own pitch out here. It looks completely different, and now they're bringing in Safwan to try and break the shackles. I personally feel that they should have tried with a spinner. I haven't seen the playing eight as of now, so I do not know which spinners they have in the side as of now. Someone like Asad Bukhari, they have him in his squad. Yes, absolutely. So probably someone like Bukhari would have been nicer, but Safwan is very smart as well, and he might do the trick for Dar Saab. And there is nothing more than a Raja Uzair wicket that would do for the Knight Riders to bring them back in the game, because as of now the strikers seem to be in complete control. So Safwan Ahmed will start against Abdullah Faiz. This time Abdullah Faiz, I think the plan is simple: keep Raja Uzair on strike, let him take the bowlers and shatter their confidence, if you may. Absolutely, very, very intelligent cricket from Abdullah Faiz. Not taking any chances, just dabbing the ball with the straight bat here and there, not keeping any pressure of dot balls or any build-up, so that Raja Uzair can play the way he wants to. So Safwan Ahmed to Raja Uzair. Raja Uzair once again uses his feet off his pads, nudges it for a single. That's very smart batting. Like I mentioned before as well, that he is completely exposing his stumps so that there is absolutely no chance of an LBW. Safwan for his third delivery now to Abdullah Faiz. Abdullah Faiz this time picks it up. Will he be taken? Falls into the no man's land. Just a half chip, I would say. Nothing more. No.
Damir, I personally feel that if, and that's just my thought on this, that since Raja Uzair is probably standing somewhere around fourth stump and playing every ball from fourth stump, wouldn't coming from the over the wicket angle be more of a like a tactical move that they might use to probably make him change his stance? Well, yeah, you're right about that. And with the experience that these bowlers have, I think I would have expected better from them, and maybe changing something up for Raja Uzair as he just scored another boundary. He's just playing the field very smartly, and probably the bowler is not bowling to their field. This was more of a ball that should have been bowled according to the field, because that is the only shot that can be played on such a delivery. Better delivery this time by Absolutely. Safwan. When you do not have a fielder fine on leg, you should probably not be drifting on the pads, especially against someone like Raja Uzair, who's going to pick them up for boundaries on any day. He started off so well as well. Absolutely. Then there are some Raiders and Hurricane boys who are watching the match as well, and they might be thinking that how they handled the wicket and how Raja Uzair is batting seems like a completely different track. Yes, absolutely. So a bit of a keeper change, a little break. Until then, let's put some light on the other game happening in Greenacres, the Avengers versus the Dynamites. The Dynamites required 179 to win, and they already are on 173 for 1 after 14.3 overs. A half century by Ehsan Ali Khalid of just 19 deliveries, half century by Arif Zafar on just 22 deliveries, half century by Umar Shahjahan Dogar on just 29 deliveries, and they are well into the game, just requires 6 more runs, and I think they are going for the bonus win here. It's a definite bonus, and I think it will be difficult for the Avengers to come back from here, because the groups are already very tight, and I personally feel that somehow they've missed that part on the drafting where they picked all the fast bowlers, because Greenacres is terrible for fast bowlers. It's a proper batting paradise against fast bowlers, and you need a few spinners, and I think the only spinner that they have in their squad is no one but Salman Dogar. Salman Dogar, absolutely. So I think they've missed it on the auction, I feel. I think Rao was going for the same plan as he went in the previous edition of the Premier League, going with the all-paced battery attack, but this time it couldn't fare well for him. Yes, but he did still have the likes of Talabela who can make adjustments on such wickets. So I think that Rao has missed out on not picking him. In fact, he went unpicked, and that's quite a surprise. Coming back to this match, Raja Uzair he's keeping his momentum. He's going after Shaban too as well. We talked about the presence of we kind of forgot about Shaban being in the team as well. So no mercy to Shaban as well as of now. Yes, started against Shaban with the 4. And a big appeal by Shaban Akhtar this time. The umpire doesn't look bothered. Yes, and neither does the keeper. So I think the same thing that we're talking about, that he's playing them way outside off stump and just taking any element of that was. I personally feel that it was a much closer call, but probably pitching outside leg, I would feel, and then missing leg as well. So good delivery by Shaban to follow up against Abdullah Faiz. And I think this is the channel where he needs to bowl. Yes, you just keep it nice and tight on good length and keep them drifting outside off stump, 4th or 5th line stump. Shaban Akhtar goes in again, once again on that channel. Abdullah Faiz nudges it towards the third man fielder for a single. Absolutely, a tad bit shorter than the previous one. The previous one is the perfect delivery, so it gave Abdullah Faiz the time to adjust and nudge it. You can probably take such an approach against someone who's just nudging the ball, but fine, that's a very fine shot. And will it go the distance? No, it does. It's very good fielding, just keeping it to 2. Yes, Usman Masood was the fielder. He is very, very quick, and he just... What a fielder to have fielding fine, when especially if the fine fielder is covering so much ground here and there.
So they've trusted Usman Masood with the ball. And Usman is a seasoned campaigner, not that easy to play, I would say. So I think that he might as well do something. Oh, it's not Usman Masood, it's actually Ali Javed, and he's very good as well. So A bit of a flighted one this time to Abdullah Faiz, who plays it towards the leg side for a single. And Raja Uzair, who is in a good mood tonight, is back on strike. yes, let's see how Ali Javed bowls to him. Knight Riders have almost tested all their cards as of now, but Raja Uzair for now is unmoved. Good ball again, right under the bat, not giving much to Raja Uzair. So Ali Javed started off well. 2 runs of his 2 deliveries so far. Nothing given to Raja Uzair where he can fare. Ali Javed now for his 3rd delivery to Abdullah Faiz. A bit of a pace off delivery. Abdullah Faiz goes down the ground, finds the distance, finds the gap, and that's a 4. I think there was a poor ball, to be honest. Much of a half tracker and gave him way too much time. Giving him the the opening that he needed, because he was just nudging them for 1s and 2s as of now. But that was the need of the hour, to be honest. As Absolutely, and I think the last thing that the KR want is Abdullah Faiz to also start going. So another flighted delivery, this time a better one by Ali Javed for a single. Absolutely, no room for half trackers, and Knight Riders have tested all their cards as of now, apart from Bukhari. So I think he'll be tested very soon as well if these two keep batting like this. Raja Uzair once again using his feet, but I think it was a tight ball around and could have been given a wide, but just in at the last moment, spun a little bit. a very good delivery to end his over, who gave away 7 in his first. The strikers are 61 for 1 after 7 overs. Very, very, very mature approach from strikers, keeping the pressure on all the bowlers. There hasn't been a single bowler who hasn't been hit for a boundary early in the over as of far. So keeping it on the bowlers, not giving them time to use their own way around. So all the experience in the Knight Riders squad being tested. So Shaban Akhtar is back on. And just to inform you, the Dynamites are 1 away from a bonus win against the Avengers. Would you call it an upset, Damir? Well, not an upset. I think the bonus is an upset, but the squad that the Dynamites have, I think we expected them to win against this Avengers side. But the bonus is a surprise for sure. Absolutely. So far, it doesn't seem like third time lucky for Rao Haris Tawfiq. It's no doubt. And what a delivery that was from Shaban. Good effort as well. Absolutely. Was that a catch? Was that a chance, or did it bump? I feel like it was a I chance. think that was a chance, and first of all, Damir and Umar Bashir have been doing a brilliant job here with the mic and putting all of our thoughts to words. But yes, I would have to agree with both of you that the result in the other match, I think it's a bit unexpected, because we thought that there would be a bit of a fight from the Avengers, considering that they have a big side this time around and they have 2 spinners as well. But then Wasip Tai wasn't given a chance tonight. It was Rao Haris decided to go with his all-pace attack. And good running in the meanwhile. Abdullah Faiz quickly turns for the second. So these two are doing a decent job up till now. The only dismissal of Abbas Raza Khan, who looked to be really aggressive on this track. Well, that's, I think, what their strategy has been in this tournament, to come in and go after the bowling right from the word go. Absolutely, and that's how he plays. So he went
with his natural way of playing. So sometimes you know it works and sometimes it doesn't. But he wasn't more of a he wasn't a liability. His innings wasn't a liability. It was a quick fire 9 before he got out. And the other both the boys have covered it really well. So I think that he wouldn't be sad on losing his wicket. Obviously he would be, but he wouldn't regret it. And it's been pumped. Huge six. As far as the surface is concerned, I think Raja Uzair is the ideal player. I think it's a different surface for Raja Uzair tonight. I mean, he is just outsmarting, outclassing the KR bowlers. He's that sort of a player who really enjoys batting on difficult surfaces because he's played all of his cricket in Karachi, and he's no stranger to a surface like this. For us in Lahore, this might be a bit of a challenge, but guys from Karachi, they would just work the spinners around with those ramp sweeps, slog sweeps. So he's loving it out there. So Raja Uzair turning back the clock to his Karachi days. And Shaban Akhtar, who will bowl his last delivery. Raja Uzair is on 42 of just 18 deliveries. Shaban goes in. Flighted delivery this time. Raja Uzair plays it towards the leg side. He won't get anything more than a single. Yeah, and also the fact that Shaban Akhtar needs to realize that the slower you bowl on this surface, I think the more purchase you are going to get. So Raja Uzair will retain the strike for the 9th over as well. So I think Uzair Dar will turn to Asad Ali Bukhari or Faiz Qamar if he is the on-field captain tonight. So Asad Bukhari has been given the ball, and Asad Bukhari is certainly a character likes to, fire them in, but he will have to be very smart on this surface tonight as well. And I'm just thinking, if we had the stump mic, we would have heard something very, something we couldn't play on the stream with Raja Uzair and Faiz Qamar and Asad Bukhari on the same pitch. So Asad Bukhari is the bowling change. He will be bowling to Raja Uzair to start off his spell in this match. Yes, I think Faiz Qamar would certainly love a wicket or two here. They really need it because the strikers are 71 for 1 after 8 overs. Asad Bukhari goes in a pacey delivery, a usual Asad Bukhari delivery towards the offside. I think the faster man will need to change the pace, bring in those slower deliveries, those into the wicket balls, and I think that is the order of the day for the faster man. It takes the outside edge, and I don't think the third man will be able to cut that off. Asad Bukhari fires them in and takes the outside edge of Abdullah Faiz. So 4 more runs for the Knight Riders, for the strikers. Abdullah Faiz getting a boundary to boost his confidence as well. Asad Bukhari, who has bowled 2 deliveries so far in this over, giving away 5 runs. He runs in for the 3rd one. Abdullah Faiz once again towards the offside. A good delivery by Asad Bukhari. Single, and Raja Uzair, the man, the danger man, is back on strike. Big shot from Raja Uzair. Will that be taken? Well, 1 bounce to the fielder. Will only be a single. So close escape for Raja Uzair, who is on 44 at this point. Well, 45 with that single added. Well, he had placed it to the right of Safwan, so Safwan had to run for it and obviously got there on the first bounce. Asad Bukhari's last delivery to Abdullah Faiz. Plays all around it, and Asad Bukhari has gotten his team another wicket here. Big wicket as well, and this partnership needed to be broken, and Asad Bukhari did just that. Yes, Abdullah Faiz going against the line there.
I think no needed at this point by Abdullah Faiz. So a bit of a risky shot. But once again, the strikers lineup, like always, it is full of batsmen, full of explosive batsmen. No Umar Azam available today, but the strikers had Raja Balaj. I think they've decided to play Ali Sikandar in place of Umar Azam tonight. Well, it is Raja Balaj. Yeah, it is Raja Balaj. So still no Umar Azam, no problem for them. Raja Balaj is more than a capable Raja Balaj batsman. is replacing Umar Azam, and that gives them an option in the middle order, another option in the middle order rather. They still have Raja Hasnain to come in as well. So a very, very deep batting lineup for the strikers. Not only Raja Hasnain, they've got Maaz Khan as well. So Muaz they've got Khan as plenty well. of batting still to come. I And think it's one of the sides who've got the biggest batting lineup, I would say. Raja Uzair is just 5 runs short of his half century. Safwan Ahmed has been given the ball for his second over. I think it's Shaban. No, it's Shaban, yes. Shaban Akhtar. Shaban Akhtar for his third over, who has given away 17, maybe bringing him for that attacking bowling against Raja Uzair and dismiss him before he gets his half century. He runs in a bit of a flighted delivery played towards the leg side by Raja Uzair. A bit of a fine leg shot there, a good shot, but nothing more than a single as the fielder was placed beautifully there by the Knight Riders. So another good delivery played towards the third man region and the fielder couldn't reach that one. Raja Balaj starts off with the boundary to get off the mark. Facing Shaban Akhtar now. Good shot straight down the ground, but the fielder is there to cut this one off. Well, Raja Balaj is also another one from the Raja lineup, and he is certainly someone who can smash the ball a long way. He usually takes his time, but He's also so beautiful to watch when he starts get going. yes, because he's so proper with those hits, that straight bat, And I think one of those rare batsmen who can play every shot comfortably, like someone like Mia Manan or Faiz Qamar as well. so few suggestions given to Shaban Akhtar by Faiz Qamar. Shaban Akhtar is his last delivery to Raja Uzair. A bit of a flighted one this time. Raja Uzair smashes it to the leg side, completes his half century, and what an innings that has been by Raja Uzair. 50 of 24, and how important that could be for this game as well. So that takes us to the strategic timeout, and what a time to go out. He's done his job inside the first 10 overs, and he's leaving it to the batsman to come in to take this further. So we will see you after the strategic timeout.
So we are back after the strategic timeout. The strikers are 88 for 2 after 10. They're looking very good out there. Raja Uzair just completed his half century in 24 deliveries. Raja Hasnain is the new man in, and Raja Balaj and Raja Hasnain will take the responsibility from now on. Asad Bukhari is the one bowling the 11th over, and a good delivery to start off with a single. So Raja Hasnain replacing his brother. He will certainly have to role to play here tonight for his team. And he's ready to work hard for his runs out there. He's also someone who will look for those big hits at some stage. And another one of those who comes in with the debate of Mia Manan and Umar Azam. I think Raja Hasnain would be more in the category of Mia Manan than Umar Azam. Because Umar Azam can be technical if he wants to, but he chooses to just smashes out there. He's got the weight of his bat exactly the same as Chris Gale, and obviously he looks for those fuller deliveries to just smash them out there. Whereas Raja Hasnain can play all across the park. Will that be given out? And it has been referred to a third umpire. This might be very close. Raja Hasnain wanted to take a double there. So no need for those risky runs. Let's put some light on the other game, the Invincibles versus the Legends. Another big game, must-game win for the Invincibles as well. They have started off well. The Legends are batting first, and Mohammad Numan Bilal giving away 4 runs in the very first over. Mohsin Aftab and Salman Ali are the ones opening the innings for the Legends. So another game where you should keep your focus on, another tight game. Closer. So we are still waiting for the final decision by the third umpire. Is in. Raja Hasnain survives very nearly, very mere margins. I think that was risky and he shouldn't do it again. What do you say, Hamza? For sure, I think risky runs like these are not required at any stage because there are loose deliveries, 1 or 2 in every over, to say the least. Also, for someone like Raja Hasnain, he knows how important he is. So no need to run those silly twos
because we know he can get big and get once he gets going, he has his 50 on the cards. So with that being done, the strikers are 93 for 2 after 11. Raja Hasnain lucky to be still out there. So, well, even though Faiz Qamar is probably one of the fastest hands behind the stumps when it comes to his keeping, that was very close, Amit. Well, Raja Hasnain is a quick runner as well. I mean, if it is a not out, we have to say very good running. I think for any youngsters watching, he was dragging his bat throughout, sliding his bat rather. I think that's what saved him. So once again, a little bit of experience coming into play for Raja Hasnain there. So they have brought on Safwan now. I think Safwan has been given the role of the death bowling in this tournament by his team. Well, actually, it is the power surge over which they have taken here. So Raja Balaj facing the very first delivery, finds the distance over the fielder's head, and that's a 4. So a good start to the power surge for the strikers, not so much for the Knight Riders. yes, perfectly placed in the gap by Raja Balaj, and Safwan will need to use the wicket here. He will need to bowl it into the wicket in order to make things a bit difficult for Raja Balaj. Safwan runs in again to Raja Balaj, this time straight into the fielder's hands. I think that was a much better delivery because Raja Balaj will look to shuffle and move around. So that was a good delivery, went straight to the fielder. Safwan running in for his third delivery now to Raja Balaj. Raja Balaj this time slashes it towards the leg side, and his catch has been dropped. This could be very, very expensive for the Knight Riders. That was a sitter. I think anyone would have taken that. In all honesty, he had his body behind it, both the hands going to it, and he still drops it. And Safwan will now bowl the last 2 deliveries. Well, this delivery to Raja Hasnain. He runs in. Raja Hasnain is prepared for this one. Good delivery yet again by Safwan Ahmed. So a good power surge over so far by Safwan. 6 runs coming off it. Yes, Safwan is a good bowler, and in the previous game as well, if you remember, I said this surface will suit him because he bowls into the wicket and he has that slower delivery as well. So the last delivery of power surge to Raja Balaj comes off his line. Bit of an inside edge there, but couldn't purchase anything else than a dot ball. So that's the power surge over done. A really good power surge over, we must add. Just 6 runs given away while having Raja Balaj and Raja Hasnain against him. So hats off to Safwan Ahmed. Brilliant power surge over. The strikers are 99 for 2 after 12. So not too bad for the strikers. Yes, I think considering how the wicket has behaved, they are at par with the run rate and they are on course to getting at least 170 here, which should be more than enough, I personally feel, if the bowlers are used properly. And strikers once again has a lot of spinners, very experienced ones as well, with Abbas Raza Khan Uzair. And what a shot that is from Raja Hasnain. This is what the Knight Riders would have wanted. What a shot that was. That is the typical Raja Hasnain. Huge 6 over the covers, gives himself room, frees his arms and smashes it towards the longest boundary of the ground. And that is smart batting by Raja Hasnain. He got the boundary and just keep the scoreboard moving without playing any aggressive shot again. So Raja Balaj is back on strike for Asad Bukhari's third delivery of his third over. Yeah, I think Asad Bukhari should take a leaf out of the other spinners and try to slow it up a little bit. Asad Bukhari runs in, another pacey delivery by Asad Bukhari, nearly missing. Almost got rid of Raja Balaj there.
Well, the occasional ones that are bowled quicker can stay low, but that doesn't mean that you bowl every ball with the pace on it. Pace off this time. Raja Hasnain towards the offside. Finds the gap and another 4 for him. What a start of an innings for him. A near run out miss for Raja Hasnain, and since that he has been completely different. Heather. मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन हाँ 3.1 भाई इसकी तो रील्स पे रील्स निकाली जा रहे हैं. अच्छा ये मैंने एक्सपेक्ट किया, कभी अपनी जिंदगी में कहते हैं. Legends versus Invincibles. मोहसिन आफ्ताब. So they're So just to put some light on the other game, Legends versus Invincibles, Haider Farooq, the emerging pick, most expensive emerging pick this year as well, just got rid of Mohsin Aftab after taking a sensational catch, bowling as well. So the Legends are 20 for 1 after 3.1. Good start they got, but Haider Farooq got rid of Mohsin Aftab to break the partnership. Shaban Akhtar has been brought back in against Raja Hasnain. Raja Hasnain plays it towards the offside. Shaban Akhtar's last over of this game. So Shaban Akhtar will be bowling to Raja Balaj, who wanted to smash that over deep mid wicket, but it was a quicker delivery, stayed low, and he was nowhere near it. Will that be taken? Well, that's another chance, goes begging. He had both hands to it and even could have gone for it in the second go, but I think the fumble made the ball pop out a little bit too harder and a bit too away from him to get to it. Well, that's a wide, and that's gone all the way for 5 wides. So everything going wrong for the Knight Riders at the moment. So Shaban will be bowling to Raja Balaj. Comes in. This time Raja Balaj gets the connection and he gets the distance. What a shot that was. The sound of the bat was so good. Well, he was looking for this shot for some time now. But finally he gets one in the slot and he wastes no time in dispatching that one. Shaban comes in once again, a loopy delivery. Has he placed it in the gap? They are running for it, but the fielder gets there, so they will get 2 runs. So a very expensive spell for Shaban Akhtar. 4 overs, 41 runs, no wicket for him. So not the usual Shaban Akhtar, I think, and especially on this type of surface where we just saw. Well, also remember that he is a platinum pick, so there is always added. I think he's a gold this time around, so well, he's dropped his game as well to the gold level. Well, still, someone like Shaban Akhtar, everyone expects better from him, especially with the ball. And Raja Baraj is looking good out there, scoring 25 of 15.
and Raja Hasnain as well, scoring 17 of 8. With Raja Uzair already retired after scoring a 50 of 24 deliveries. So a lot of Rajas performing very well. It's Rajas galore. I think they should name it to Raja Strikers. I think they've got like 5 Rajas, 4 or 5 Rajas. Raja Talal as well. Raja Talal, Raja Balaj. Raja Hasnain, Raja Uzair. 4 out of 8. So half of the team is Raja. Yeah. Asad Bukhari now with his second delivery to Raja Balaj. He fires in a Yorker there, and Raja Balaj is looking at the toe of his bats. I'm sure it's an expensive one, Adil Shah. Better bowling by Asad Bukhari in this over so far. I think the amount of distance that they're getting on their hits, I'm quite sure that probably one of the most expensive cricket bats are being used by the strikers. Will that be taken by Safwan? And he takes it comfortably. So Raja Hasnain has finally been dismissed. And So Raja Hasnain goes out after scoring 18 of 10 deliveries. A disappointed Raja Hasnain making the long walk back to the dugout. Asad Bukhari strikes and gets his man, second of the night for him, with Abdullah Faiz and Raja Hasnain. Today Izam just told Bukhari before the match that you will take 3 wickets. Let's see. 1 wicket left, and it's his third over, Yes, 2 deliveries left as well. and after that 1 over left. No, it's his fourth over, it's his last over. I think we'll have to have a meeting. Shahji, I think we'll have to have a meeting with Izam after the game, because we expect our crew to be unbiased. So Muaz Khan is the new man in. A capable batsman, more than capable batsman as well. Very capable man. जितने भी spectators देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि Muaz Khan is probably one of the players to watch. One of the young, good, better young players in the Premier League. बहुत ही ज़बरदस्त player. Asad Bukhari ही ज़बरदस्त player है. runs in for his fourth delivery and played towards the offside. Smartly played by Muaz Khan to get off the mark. एंड आई पर्सनली फील कि माज खान को ऊपर भेजना चाहिए था. जैसे आदिल शाह ने अभी पॉइंट आउट किया कि राजा बलाज और राजा हसनैन की एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है कि दे ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट एंड द लॉन्ग ऑन बाउंड्री और काउ कॉर्नर, और वो उसी की तरफ बॉल ढूंढते हैं. लेकिन आई थिंक समवन लाइक माज खान विल शो यू कि हिट सिर्फ वहीं नहीं लग सकता, और जगहों पे भी लग सकता है. So that's Asad Bukhari's spell done. A good spell for sure. 4 overs, 28 runs, and 2 wickets, 2 very big wickets in Abdullah Faiz and Raja Hasnain. The strikers are 130 for 3 after 15. आई थिंक एज फार एज द रन रेट इज़ कंसर्न अभी भी स्ट्राइकर्स को कोई इतना खास बॉदर नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके पास बैट्समैन है राजा उजैर वेटिंग इन द डग आउट. तो अभी भी दे आर ऑन कोर्स टू गेटिंग 170 180 यहाँ से. लेकिन देखना पड़ेगा कि अब उनके आने वाले बैट्समैन कैसे खेलते हैं. बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे तो शायद वो ना पहुँच सकें 170 180 तक. फाइनली पावर सर्ज, इज इट द पावर सर्ज और इट इज Power surge was taken against Safwan. That was a brilliant power surge over, by the way. So Safwan will be back into the attack, and We are 130 in 15 overs. yes, so I think the Knight Riders will need to pull things back from here, और 2-3 विकेटें बहुत ज़रूरी हैं. But issue ये है कि strikers के पास भी बॉलिंग थोड़ी सी बस पूरी है. step up. Faiz Qamar is also back in the field after taking the keeping gloves. So we will see him in the death. बिल्कुल. आई मीन उन्होंने इस चीज़ को वर्कआउट कर लिया होगा कि जितना स्कोर अब हो गया है, आई थिंक दे विल नीड फाइज कमर टू बोल इन द लास्ट फ्यू ओवर्स. आई थिंक यहाँ से ही विल बी बॉलिंग एटलीस्ट 2 or 3 overs. 2 overs.
2 overs, yes. I think और एक बहुत ही बड़ा शॉट खेल दिया है राजा बलाज ने, स्कोर कर दिया बलाज ने। और मुझे लगता है कि ये कहीं जी ग्रिल की चिकन कढ़ाई में गिरा होगा जाके। 33, आउट ऑन 18, 18. जी ग्रिल की कढ़ाई में गिरता ही है, लेकिन लकीली थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट रेस्टोरेंट्स का टाइम जो है वो कट शॉर्ट कर दिया गया है, वरना आज बॉल कढ़ाई में। वरना आज बॉल कढ़ाई में थी। A bit of a banter by Hamza Belan. वैसे तो सर कढ़ाई में होता है, लेकिन आज बॉल कढ़ाई में होता है। So सफान अहमद अब तीसरी गेंद के लिए। और स्टाइलिशली प्लेड बाय माज खान ऑफ हिज टोज जस्ट फॉर अ सिंगल। और दोबारा वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा लेंथ को चेंज किया सफवान ने। सफवान बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं और ही बॉल्स अ हैवी बॉल एज दे से। गुड लेंथ में जो इसकी बॉल है इट्स वेरी निपी वन और थोड़ी शार्प भी होती है, वेरी रेयर कि उनको वहाँ से शॉट लगे। एंड ही उसी बॉल पे स्टॉक बॉल उसी बॉल पे ना ये राजा बलाज की विकेट ले गए थे। अगर वो टेक्निक वाइज फुरकान थोड़े से बेहतर होते तो इट हैव बीन कर्टन फॉर राजा बलाज एंड बॉली से। बट वही है कि क्रिकेट इज़ वेरी फनी गेम और ये छोटे छोटे लैप्सेस इन द एंड काम करते हैं। Safan Ahmed to bowl his last delivery of this over to Muaz Khan. Keeps it outside off, a little bit too much outside off, given a wide, second wide of this over. So that completes his third over, giving away 27 runs, no wickets for him. And Muaz Khan is on 6 of 4 deliveries, whereas Raja Balaj is standing strong on 35 of 20. The strikers are 143 for 3 after 16. So they are on course to that 175-180 mark run. आई थिंक यहाँ से 2-2 ओवर जो है वो मुराद शाहिद और फाइज कमर करेंगे। माज खान ने अपना हेलमेट चेंज किया और सर्टनली ही विल हैव टू डू दैट अगेंस्ट द पेस ऑफ मुराद शाहिद। बहुत ही पेसी बॉलर हैं, बट पहली बॉल पे ही ज़बरदस्त शॉट खेल लिया है राजा बलाज ने ऑफ हिज बैक फुट थ्रू दी ऑफ साइड। राजा बलाज ने सारे मैच में लेग की तरफ ज़्यादा शॉट्स खेले हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी ऑफ साइड की शॉट भी दिखाई है। मतलब स्ट्राइकर्स मिस नहीं कर रहे जो मुलाजिम, क्योंकि राजा बलाज ने एक बहुत उम्दा इनिंग्स खेल ली है। क्या वजह हुई होगी उन्होंने आज मुलाजिम को? उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, अपेरेंटली कोई अवेलेबिलिटी का इशू था जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो घूम फिर के आए हैं और जिस मूड में वो आए हैं तो ये डेफिनेटली म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू ही वो बाहर हुए हैं टीम से। लेकिन शाहजी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं पीर जी को, और पीर जी को 2 चौके पड़ चुके हैं। किस तरह से कम बैक करें? एक तो इतनी गर्मी है और मैं कभी भी इनको न्यू बॉल के बाद ना इनको ओवर नहीं देता, क्योंकि ये मेरी टीम से भी खेलते रहे हैं। कप्तान भी रहे आपके LSC वगैरह? LSC में तो कप्तान थे नहीं, हमारे कप्तान नहीं रहे हैं क्योंकि पहले कप्तानी इनको कभी भी नहीं दी गई, क्योंकि ज़ुहैब शाह ने कप्तानी हमेशा से छीन ली थी आफ्टर वकास। आप लोगों के विकास आने से में एक बैच पहले ये कप्तान रहे हैं टूर्नामेंट में, मैं खेला था इनके अगेंस्ट। होगा एक आधा, वो गलती होगी क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में होंगे, लेकिन जैसे ही हम आए हैं ना, बड़ा गोल गोल सा मुंह था और बड़ा पफ निकालते थे मुराद। सेकंड ईयर में जैसे ही हम आए हैं ना उधर, क्या उसको कहते हैं, बरकी, तो फिर हमने टेक ओवर कर लिया था। हमने थर्ड फोर्थ वालों को कुछ नहीं दिया। बहरहाल बट ग्रेट बैट्समैन, गुड बॉलर, गुड फील्डर, बट ही इज़ वेरी गुड विद न्यू बॉल और एक्सपीरियंस तो हैं और ही कैन यूज़ स्लोअर वंस, कटर्स इनके बहुत अच्छे हैं, बट एज वाइज वो थोड़े से ना
थक गए हैं, इसलिए उनसे ना बॉलिंग इन आखिरी ओवर और जैसे कह रहा मेंटली थक गए हैं। नहीं मेंटली नहीं थकते, जवान है बड़े। जवान है मेंटली, बट ओल्ड बॉल ना कम ही करवाते हैं। बट टुडे ही इज यूजिंग कटर्स, अच्छे कटर्स कराए आफ्टर द 2 बैक टू बैक फोर्स, और ऑप्शन भी नहीं है फाइज कमर के पास कि किसी और को दें। So with that being said, the राजा बलाज जो है वो 44 पे आ गए हैं ऑफ 23 डिलीवरीज, तो बहुत अच्छी इनिंग्स फॉलोइंग अप राजा उजैर। हाँ, वेरी गुड इनिंग्स। पहले तो जो राजा उजैर हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म दिया है फॉर बलाज, फॉर द लाइक्स ऑफ बलाज एंड राजा हसनैन एंड मौज खान एंड ये सारे जो है ना गुड हिटर्स हैं, और ऊपर से अगर आपको एक अच्छी 50 मिल जाती है तो दे कैन स्कोर बिग, एंड वो वी कैन सी दिस शॉट बाय मौज खान फॉर अ 6, read that slower one, slow delivery, and with a straight bat, good technique, hits for a 6. मौज खान एक प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है, और मैंने पहले बताया था कि इस पिच के लिए बहुत सूटेबल बैट्समैन है। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, लेकिन फाइज कमर का एक्सपीरियंस, अगला बॉल उन्होंने यॉर्कर किया, लो फुल टॉस, दे आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू पुट अवे। और राजा बलाज जो है ना वो मिड विकेट की तरफ देख रहे हैं और लॉन्ग ऑन की तरफ देख रहे हैं। दैट मीन्स ही नोज़ कि अगर ये स्लोअर वन आई तो मैंने, क्योंकि स्लोअर वन का मतलब है कि राइट है तो अंदर ही आएगी, तो वो मैंने उठा देनी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और उठाने की कोशिश की, इनसाइड एज हुए, कीपर इज रनिंग बट इट्स गॉन फॉर 4। सो जैसे मैंने आपको कहा था कि वो मिड विकेट देख रहे हैं, मिड विकेट की तरफ देख रहे हैं, उन्होंने वही शॉट ट्राई की, बट लकी रहे राजा बलाज। और राजा बलाज इस वक्त लाइक 1 रन 2 रन रह गए सिर्फ 48 पे। कैन ही गेट हिम आउट? I think he'll get the 50 here. Uses his feet, goes down the ground. ये बॉल खड़ी हो गई है, लेकिन नहीं हुई, और डिस्टेंस भी था। हैं क्या ड्रॉप हुआ है? और 4 रन्स, 1 bounce 4 runs. It's gone, इस तरह कंप्लीट हो गई है 50। राजा बलाज आज बहुत सारी लाइव्स लेके जा रहे हैं साथ, और ये राजा बलाज की 50 से ज़्यादा मुझे नाइट राइडर्स की 50 जो है ना वो लग रही है, क्योंकि उन्होंने 3 चांसेस, 3 कैच, ड्रॉप कैचेस, और आई थिंक एक मुराद शाहिद ने किया है, हु इज़ द सेफेस्ट फील्डर आफ्टर फाइज। बट आज लगता है कोई जिन टोना करके आए हैं, या फिर डार साहब कुछ पढ़वा के आए हैं, या फिर डार साहब की जो एक ऑरा होता है उसके अंदर मारे गए हैं सारे। और आपने सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन खैर शाहजी, अभी नेक्स्ट मैन आए हैं हसन सरदार, ये भी वन ऑफ योर पीयर्स, तो इनके बारे में कुछ बताएं, कैसी बैटिंग करते हैं? हसन सरदार को क्लैरिटी है, आई मिस यू हिट, यू मिस आई हिट, और कुछ नहीं इनको आता। ही कैन हिट बिग सिक्सेस, सो ही कैन हिट इट। देखा, मैंने कहा ना वो आते साथ ही घुमाएंगे उनको, और उनको होना भी यही चाहिए। पीछे 2 इतने बैट्समैन पड़े हुए हैं, तो यही होना चाहिए, एंड ही कैन गो फॉर सिक्सेस एज वेल। कचरा घुमा सीन। हाँ, अच्छा इनके बारे में आपको बताता चलो, एक फाइनल इन्होंने जितवाया था, वो ओपन था फॉर दुबई ओपन के लिए। इट वाज द फाइनल बिटवीन स्नेक्स एंड फुफोस, इफ़ यू रिमेंबर। मेरी एक्स टीम है। हाँ, एंड LGS। सो आखिर में एक इफ्तिखार है जो कनाडा में बड़े बॉलर बने फिर रहे हैं, इफ्ती के नाम से। बिल्कुल, तो वो बॉलिंग करा रहे थे, लास्ट 2 बॉल्स पे 18 रन चाहिए थे टू विन, और हसन सरदार खड़े हुए थे, एंड वी वन दैट मैच। तो खुद ही सोच ले आखिरी 2 बॉलों में क्या हुआ होगा। नहीं, मुझे पता है और उस मैच में क्या हुआ था, बिल्कुल मुझे पता है। और इफ्ती को जो है वो बड़ा शर्मा के मिलते थे उसके बाद हमसे, बिकॉज उनको पता था कि ये बड़े नॉन हेजिटेंट से लोग हैं, और ये जो है किसी का लिहाज नहीं करते। ये ओवर सफवान को दे दिया, इसका मतलब है कि मुराद या फाइज भाई में से कोई एक बंदा कराएगा फुल 4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हसन सरदार को चाहिए कि माज को खेलने दें, बिकॉज ज़्यादा चांसेस हैं कि टेक्निकल बॉलिंग के अगेंस्ट माज बाउंड्री निकाल लें, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल बॉलिंग हो रही है। सफवान, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और इस तरह की विकेट पे तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते और कर भी रहे हैं इस टूर्नामेंट में।
तो सफवान टू माज, जोर से बल्ला घुमाया और आउटसाइड एज लगी, लेकिन गुड एफर्ट बाय द फील्डर, लेकिन ना रोक सके। इस तरह 4 रन्स हासिल किए माज खान ने। आज बहुत ज़्यादा फील्डिंग लैप्सेस मैंने देखे हैं, और इस पीएल के अंदर जब तक आप अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे ना, तो योर चांसेस टू विन बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि 2020 में अब फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग ना इक्वल आ चुकी हुई है, इक्वल फुटिंग पे है। तो ये आप नहीं कर सकते कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और फील्डर नहीं अच्छे। तो यू हैव टू बी गुड इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 2। और ये बोल्ड कर दिया है मास को सफवान ने, ब्यूटीफुल बॉल कटर कराया, और वो क्योंकि इन्होंने अब शॉट्स खेलनी थी तो ही हैड टू टेक द चांस एंड ही इज आउट। और वेल डिजर्व्ड विकेट फॉर सफवान। थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है, बहुत ऑन पॉइंट बॉलिंग कराई है। और अब जो है एक और राजा इस टीम के अंदर जा रहे हैं, राजा तलाल। बिल्कुल वाइड ऑफ द क्रीज आए एंड विद द एंगल टॉप ऑफ स्टंप। बड़ा मुश्किल बॉल होता है खेलना, और क्रॉस द लाइन गए। आई थिंक ही शुड हैव यूज्ड द पेस देयर। कोशिश करते कि ऑफ की तरफ उसको खेलते, पेस को यूज़ करते, लेकिन ही वांटेड टू गो बिग ओवर डीप मिड विकेट। अच्छा 176 हो चुका है, और इस वक्त 2 वो बैट्समैन हैं जिनको अगर आउट ना किया जाए तो ये 180 के अंडर रह सकते हैं। अब पता नहीं राजा तलाल इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ ही प्लेज वी डोंट नो। और उन्होंने जो सिंगल ले लिया है, बट यही है कि दे हैव टू गेट आउट। और ये आउट नहीं कर रहे हैं, डबल ले लिया है उन्होंने। डबल ले लिया। ऐसे भी ठीक है, अगर हर बॉल पर डबल लेते रहे तो फिर भी 190 तक पहुंच जाएंगे। हाँ इस तरह करते रहेंगे, लेकिन यह 4s एंड 6s जो है ना वो जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं इनको क्या समझाया गया है। आगे आ गए हैं फिर से फाइज कमर। फाइज कमर के आगे आ गए हैं हसन सरदार, तो ही विल गो फॉर 6s। so let's see what happens। और द स्ट्राइकर्स आर 178 फॉर 4 गोइंग इनटू द वेरी लास्ट ओवर। तो क्या हम देखेंगे हाई स्कोर यहाँ का? अभी तक 181 है। देख सकते हैं अगर यहाँ पे राजा तलाल या हसन सरदार में से कोई आउट होता है। अब अक्लमंदी ये करनी है इन्होंने कि नॉन स्ट्राइकर पे अगर आउट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर दूसरी साइड पे वो बीट कर सकते हैं। वो उन्होंने रन लेने जाना ही जाना है। तो देखते हैं कि हसन सरदार को वैसे पूरा पता है कि किस तरह ये किया जाता है, हमने इनको बहुत दफ़ा इस तरह करवाया है, लेकिन राजा तलाल को नहीं पता। तो देखते हैं कि ये 180 से ऊपर जाता है स्कोर कि नहीं जाता है। बिल्कुल आई थिंक अगर तो कोई हिट लगा तो डेफिनेटली फिर तो, लेकिन फाइज कमर ऐसे एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं कि उन पे तो प्रेशर नहीं आता, पहली बॉल पे हिट लग भी जाए। बट देखना होगा कि स्ट्राइकर्स के बैट्समैन क्या करते हैं। अच्छा बॉल, वाइड यॉर्कर। तो फाइज कमर का के टैक्टिक्स हमें पहले बॉल से पता चल गए हैं कि वो क्या करेंगे इस ओवर में, और इसी लाइन पे आई थिंक अपनी लेंथ वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हसन सरदार शॉट कहाँ मारते हैं। फाइज कमर रनिंग इन वंस अगेन, और अच्छा शॉट इस दफ़ा। 2 रन्स लेने ही होंगे। राजा तलाल वापस आए। और वे इस शॉट के बाद स्ट्राइकर्स ने 180 कर लिया है। तो बहुत अच्छा टोटल कंसिडरिंग जो पहली गेम में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, विकेट के लिहाज से बहुत ही अच्छा टोटल है। और इनसाइड एज लगी, क्या 4 रन्स मिलेंगे? फील्डर तेजी से बॉल के पीछे, लेकिन 4 रन्स। और फाइज कमर बहुत ही अनलकी, एक अच्छा बॉल किया था इनटू द विकेट। हाईएस्ट टोटल हो चुका हुआ है ईएमई का। हाईएस्ट टोटल इस पीएल में 184 हो चुका है। अब जितना भी होगा वो हाईएस्ट ही होगा। तो खैर स्ट्राइकर्स का जो बैटिंग लाइनअप है उससे तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, और आज वो उसी तरह ही खेले, अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेले। उन्होंने डेफिनेटली पिच को बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं किया। बहुत ही अच्छा बॉल फाइज कमर का, और बहुत दूर रखा हसन सरदार के बल्ले से। लास्ट बॉल लेफ्ट। लास्ट बॉल लेफ्ट और द स्ट्राइकर्स आर 184। लेट्स सी इट्स गोइंग फॉर 12 और नॉट। कचरा घुमा मोमेंट आ चुका है, और ये बॉल आई, और ये बहुत ही क्रैकिंग शॉट।
और 4 रन्स ले लिए. गुड शॉट बाय हसन सरदार. इन दी एंड हसन सरदार ने कितना किया? 13. 13 रन्स कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा टारगेट दे दिया है. So the strikers finish on 188 after their allotted 20 overs. The Knight Riders will require 189 on a very hard surface. We're in for a good game. Stay tuned. We'll be back after the innings break.
So we are back after the innings break. We have a big game, a big innings from the KR. They require 189 in their allotted 20 overs. The strikers were sensational with their batting. Can the KR repeat something like that? The KR have Murad Shahid and Uzair Dar opening for them. Abbas Raza Khan will take the first over. Yeah, I think considering the total on the board and the wickets, I think today I will openly say that it's a good move with Abbas Raza Khan taking the new ball. So Abbas Raza Khan starts it against Murad Shahid, a tad bit short, but placed towards the leg side, and nothing more than a single. Yeah, I think what Abbas should do is try to keep it away and take that lacquer off the ball, as it is a new ball, try to ball into the wicket. Okay, so Hamza, I think it's a good time for some predictions. What do you say about this game and the game happening in the Green Acres, which is Invincibles versus the Legends? Well, in the other game, the Legends are batting first and they are 82 for 2. So I would like to think that they still need a total of about 170, 180 on a Green Acre wicket, which is usually favourable for the batsman. I think if they can do that, Legends have a good bowling lineup, and they should keep put Invincibles to the test, because considering they lost the first game, they are under a bit of pressure. So you're saying Legends in that game? I mean, only if they can get to 180, otherwise Invincibles. Okay. And Abbas Raza Khan cleans him up. Uzair Dar on the very second delivery. Uzair Dar coming back to the dugout. Well, that was a nothing shot, and I think that shot wasn't on that delivery. He wanted to use the pace there, but he was nowhere, and he got trapped right in front. So the umpire had no hesitation but to raise the finger. And they've decided to send in Ali Javed. So I think there is a bit of experimentation going on tonight. I think they probably should have stuck to the old batting lineup, the Knight Riders. But there are a few changes in the batting lineup. Mind it, they are chasing 189, so they will need to send their best batsmen out there in order to put them in a good position. So I think I would like to go with strikers for now. It's not for now, I think, just the prediction. Strikers are KR, not for now. So I'll say strikers and Invincibles are my winners. So I think same predictions from both of us. But just for the fun of it, I'll say KR. Well, Damir, if you're expecting a welcome to KR message, I think that is not a big deal, to be honest. Even I can send you that from Uzair Dar's phone. So another good delivery by Abbas Raza Khan. Nothing more than a single. Ali Javed playing a good sweep shot there, obviously showing early that he can handle spin. I think that's probably one of the main reasons he's been sent out there. And Abbas Raza Khan with a half-hearted appeal there. I think Murad Shahid wanted to ramp that, and that is good running between the wickets. They come back for the third. So I think the first triple we've seen here. Might as well be the first three that we've seen. But I think while Murad Shahid was trying to sweep that, I think he got struck outside the line of off stump. Abbas Raza Khan to bowl his last delivery of his first over. A decent one so far, giving away 5 but also taking the wicket of Uzair Dar. Abbas Raza Khan runs in to Ali Javed, and this time Ali Javed placed it towards the leg side, and that will be a single.
So Hassan Sardar will share the new ball with Abbas Raza Khan. And I think a good strategy to place your premium fast bowler with the new ball. Yeah, he did a good job with the new ball in the previous game as well. Got 2 crucial wickets. Absolutely, he has a lot of pace as well. So this could be tricky for Ali Javed or Murad Shahid. Good first delivery to Ali Javed, and still he's lucky to be out there. So a good first delivery by Sardar Hassan Ahmed. He runs in for his second delivery. A big appeal and he cleans him up. Ali Javed, as I was saying, this could be tricky for the KR batsman. And Sardar Hassan strikes on the very second delivery. Well, that was coming in at good pace, and Ali Javed was all over it. He needed to play inside the line on that occasion. So, Shaban Akhtar has been sent in early. and he has to prove himself with the bat, prove his worth. Shaban Akhtar walking in. The Knight Riders didn't get a good start. They are 9 for 2 after 1.2 overs, chasing a big total, highest total so far in this Premier League on this wicket. Another good delivery by Sardar Hassan Ahmed. Another dot ball. No runs given so far in his over, 3 deliveries bowled. 1 wicket already to his name. Another big appeal and he's cleaned him up. So Sardar Hassan Khan with another bowled. Shaban Akhtar dismissed on a duck. A big wicket with the context of this game. It is getting from bad to worse for the Knight Riders. So far a maiden 2-wicket over for Sardar Hassan Ahmed. Last delivery to be bowled. Well, Hassan Sardar is changing the game big time here, and he's certainly putting his team in a position where they have this game with the scruff of its neck. So on the other hand, once again, Well, I think it's 2 bowlers who are causing havoc right now is Hassan Sardar at EME and Haider Farooq the at the emerging Green pick, Acres. the emerging pick at the Green Acres was given the responsibility of the power surge over, and he has dismissed Umair Ayub and Ali Sikandar in that over. So a sensational performance once again from the young fast bowler. What a pick by Haris Habib. I think he knew him so well because he was the highest valued emerging pick. Yeah, I mean, he's gotten fitter, he swings the ball in anyways, and he's doing a brilliant job tonight for his team. So Asad Bukhari is in here, and finally they'll get some runs
of Hassan Sardar. A couple of runs, but what an over that was from Hassan Sardar. 2 runs, 2 wickets, and the strikers are in a very good position to finish this game off. Spot of bother, I would say. And with that being said, Haider Farooq has taken another one. He's bowled Usama Sohail. So 3 wickets in his power surge over. The emerging pick playing like a platinum pick for the Invincibles. Haider Farooq, 3 विकेट नहीं उसने पावर सर्ज ओवर में. उसका cousin. So Haider Farooq, I'm feeling like a proud captain, a proud papa if you must. well, I don't know, he's in wicket mode tonight and he keeps taking wickets. So just to clear something up, it was an hat-trick in the power surge over. So Haider Farooq with an hat-trick in the power surge over. Power surge में hat-trick. So Abbas Raza Khan coming back. And is that a big appeal? I think it struck him outside the line of off stump. I have a feeling this will be reviewed. So much excitement going in both of the grounds. I want to cover both of these matches, but that won't be I think humanly Haider possible Farooq for has me. single-handedly, I wouldn't even hesitate in saying, won the game for Legends. From here onwards. Hat-trick power surge. So that will be our first hat-trick of this tournament, Hamza. And what a bowler. I've gone speechless, to be honest. I've got no words to describe because I think I will have to look at the highlights 2 or 3 times when I get back home tonight and reanalyze the game. Yes, absolutely. I think LMS will be posting some reels as well. Until then, we are waiting for the review, which was Abbas Raza Khan delivery to Murad Shahid. We are waiting for the confirmation. But well, I can't stop talking about the other game, Damir, and what a performance. I wish we could actually show the 4 wickets here as well to the viewers who are watching this game. You know how brilliant Haider Farooq has been. Nothing, and he still has 1 more over to go. Can he take the first fifer as well? I think if I was in Haris Habib's place, I would probably bowl him for another But over. there's a bit of stamina issue as well for him. So I don't know if he can bowl. But जितना pump up होगा इसका Yeah, he will. A very valid point by Shahji. क्योंकि अगर अभी he has taken 3 wickets hat trick, so you must bowl him. कितने आउट हो गए उनके? 5 out हो गए 95 पे, and they were looking in a good position. बट यू नो हैट्रिक जो है 8 वैसी जो है 8 प्लेयर्स हैं उसमें से एक बंदा 4 आउट कर जाए तो आधी टीम तो आउट कर आप गई कुछ सोचे 95 या 94 फॉर 1 थे वो, एग्जैक्टली और पावर सर्च का ओवर है और आप वो 95 फॉर 5 है, 102 for 5. 102 फॉर 5. यही ना इट्स मैच चेंजिंग bowling by हैदर And wickets as well. Ali Sikandar, Umair Ayub and Usama Sohail in the power Big surge. shot by Murad Shahid, and the fielder does not take the catch. So Boss a is dropped not catch. happy. So Bas Raza Khan will be bowling to Asad Bukhari, and strikers are pretty much on top in this game right now. Good shot by Asad Bukhari. Will he find the gap? यस ही डज And he does. So 4 more runs to the Knight Riders. These two will need to stay out there and build a platform for Faizkamar to come in and finish the job for them. But for that, Murad Shahid needs to get to his 50 first. He is still 46 off his 50. He's on 4 of 6 so far. Asad Sardar is bowling very good bowling So 2 bowlers
tonight, Hassan Sardar and Haider Farooq. Well, Hassan Sardar has only done half the job of what Haider Farooq has done at the Green Acres. Complete destruction, I would say, and what a time to perform for the team. The Knight Riders are 18 for 3 after 3 overs. They have to score. They have to score soon. And Hassan Sardar is back on attack. Bowling really well. Just giving away 2 runs and taking 2 wickets in his first over. Starting off where he left the first over. Another out. लेजेंड्स का एक और इमादुद्दीन ने बहुत ही खूबसूरत बॉल कराई और आउट कर दिया है. So a big collapse in the other ground. And here as well, Sardar Hassan strikes again. And bowled Murad Shahid. Oh, he's bowling beautiful in swingers. और बहुत ही अच्छा मैचअप था. But Murad Shahid technically sound. Still Hassan Sardar got better of him. Hassan Sardar's 3rd wicket of the night. He still has a lot of bowls to bowl. 1.2 overs, 2 runs, 2 wickets. 3 wickets. 3 wickets. Beautiful bowling by Hassan Sardar. It was a great pick. He was a great pick by strikers. And he's showing why he was their best bowling pick. एक और आउट हो गया लेजेंड्स. हाँ, इमाद ने out. 7वां आउट हो गया. What a delivery Another by Hassan out. Sardar. I think एकदम से ये आउट की हवा चल पड़ी है. हम पता नहीं वो इलेक्शन रूम में है, रिजल्ट्स आ रहे हैं. रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक और आउट कर दिया है यहाँ पे. पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एक तरफ पोलिंग स्टेशन ईएमई और दूसरी तरफ पोलिंग स्टेशन वो ग्रीन एकर्स. और वहाँ पे नताइज मौसूल हो रहे हैं. नताइज बार बार नताइज ही आई जा रहे हैं. कोई वो होल्ड नहीं हो रही है कि वो नहीं होता कि ऊपर से रोक दिए गए नताइज पे नताइज निकल रहे हैं. विकेटें ऐसे गिरी जैसे नेरी में शॉपर. और अगर हम कैमरे में अगर हम दिखा सके तो वाकई नेरी में शॉपर भी आ रहे हैं. शॉपर भी आ रहे हैं. आखिरी जोड़ी मैं इसको कहूँगा इधर नाइट राइडर्स की, फायज कमर एंड बुखारी. और उनको बिग आस्क फ्रॉम बोथ ऑफ देम. 171 runs. Mr. Dependable is out. Well, we have a 60% chance of rain tomorrow, but at the moment, all it is raining is wickets. How about that for A wordplay? bowling masterclass tonight, I have to say. How about that for wordplay, Damir? I mean, Now they will hope कि Bela with before his 8 little overs बारिश हो जाए. ठीक है. I think legends मेरे ख्याल से 3 ओवर पहले दमीर मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे थे. Another out. एक और रिजल्ट आया है. इस्माइल सिद्दीकी ने एक और आउट कर दिया है और 7 आउट हो गए. 107 पे 7 आउट. ब्यूटीफुल बॉल बाय इस्माइल सिद्दीकी. सामने देखें सैंडस्टॉर्म. और वहाँ पे और we have a sandstorm in EME and I think इट्स नॉट अ सैंडस्टॉर्म बॉयज. मिट्टी नीचे से उड़ रही है. ठीक है, ये नीचे की मिट्टी है जो उड़ाई जा रही है. मरीना आ चुका है. थोड़ा सा अब ये हाँ, लेकिन अभी तो हवा तेज चल लेकिन पड़ी खैर है. हम थोड़ी सी बात करते हैं कि बड़े कमबैक्स हुए हैं इस प्रीमियर लीग में. हिशाम असद मतलब ऐसे लगता है कब्र से निकल के आके और वो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस तरह की सिचुएशन हो ना और ये लोग जो किस्मत के जो कह रहे हैं कि किस्मत इनका साथ दे रही है, तो यही होता है कि किस्मत ने साथ दिया है और वो आए हैं वापस बैक टू द गेम. और आते साथ ही दे प्रूव्ड कि व्हाई दे आर बैक टू द गेम. आज भी जिस तरह मातू ने बैटिंग की और 47 रन स्कोर किए. आई थिंक 22 बॉल्स 21 बॉल्स. हाँ नहीं, ब्यूटीफुल इनिंग्स. लास्ट मैच में भी उन्होंने 33 किया ऑफ 17 और 18 बॉल्स. सो सलमान अली आए हैं अगेन. ही मेड अ 50 और वो वापस आए हैं. वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है. एंड सलमान अली के पास ना बहुत सारी हिटिंग. और मुझे लगता है आई एम होपिंग कि सलमान अली ने वो रील भी देखी हो जिसमें हारिस हबीब ने कहा था कि ओवररेटेड है ये. जो आपने जो उनसे पूछा था. बिल्कुल बिल्कुल.
और वो प्रॉपर बैट्समैन हैं और एक और उन्होंने शॉट खेली है लेकिन कोई स्कोर नहीं क्योंकि वो अकेले अब इस वक्त लास्ट मैन स्टैंडिंग है तो ही हैज़ टू प्ले आउट ऑफ यहाँ हिज से स्किन। शाजी क्या टोटल होना चाहिए फॉर द लेजेंड्स? अच्छा, सलमान अली इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन, ठीक है, और आई थिंक 130 तक वो लेके जाएंगे। 130 डिफेंडेबल होगा? नहीं नहीं, ग्रीन एकर्स में 130 डिफेंडेबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो अभी आपने पहला मैच देखा है कि 180 रन 14 ओवरों में, 15 ओवरों में। ओवर्स, या तो वो बहुत miraculous नहीं, मेरे ख्याल खेले से हैं। तो उन डायनामाइट्स ने तो ऐसे मारा है जिस तरह सवाब का काम है। बिल्कुल, तो विकेट तो बड़ी ट्रू है ग्रीन एकर्स की फॉर बैटिंग, बहुत ट्रू विकेट है। और बट ये जो एक कोलैप्स हुआ है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ हैदर फारूक, और फिर देन इमाद जॉइंड इन, देन इस्माइल सिद्दीकी जॉइंड इन, तो ये कलेक्टिव एक वो है। और एक पावर सर्ज में हैट्रिक करना एक इट्स अ बिग फीट इन इटसेल्फ। अच्छा, मुझे लगता है कि हैदर को एक ओवर और देना चाहिए था और उनका फाइफर कंप्लीट करवाना चाहिए था हारिस हबीब को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है हैदर को एक प्रीमियर लीग में फाइफर, यू नो, बीइंग एन इमर्जिंग प्लेयर। यस यस यस, लेकिन अभी भी प्रीमियर लीग में हैट्रिक इन द पावर सर्च बीइंग एन इमर्जिंग प्लेयर। it's the first hat trick I think so in the power surge. Oh, great shot, but and that's gone for 4, a misfield. Well, it's windy out there and the fielders are struggling and the bowlers are struggling. Everyone is in a bit of a struggle right now. लेकिन Because बिल्कुल, क्योंकि डस्टी सी है, सारी मिट्टी उड़ रही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फील्डर्स एज वेल, इवन फॉर द बैट्समैन टू सी द बॉल, इवन फॉर द बॉलर्स टू कंट्रोल द बॉल। और कल अच्छा, और मारा परसों- अगेंस्ट द विंड है, अगर यही विद द विंड मारा था तो शायद बाहर चला जाता। तो एक ये भी हो सकता है कि विंड जिस तरह निकली है तो फाइज कमर के जो है वो उसकी उसमें आ सकती है आर्क में, तो अच्छे हिटिंग भी देखने को मिल सकती है हमें। और दूसरा आउट हो गए हैं लेजेंड्स के सलमान अली भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। I think Imad was the bowler to take the last wicket और इनविंसिबल्स को सिर्फ और सिर्फ 116 रन्स करने होंगे और मेरा ख्याल है कि उनको बोनस के लिए जाना चाहिए, इससे उनकी पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हो हाँ सकती बिल्कुल है। बिल्कुल, और ये ना बड़ा मज़ेदार प्रीमियर लीग होती जा रही है कि कल को जो हारे थे बोनस से, आज वो बोनस विंस के साथ गए हैं, सिवाय डायनामाइट्स के। वो पिछली पीएल से वो अपना ये दिखाते आ रहे हैं कि एक मैच हारते हैं एंड दी एंड सेमीफाइनल या फाइनल, बोनस ही मारते हैं। बाकी वो बहुत ही तगड़ी टीम है। और डोगर इज़ अ वेरी वेरी क्लेवर और वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन, और ही नोज कि उसकी ना मेंटालिटी की, अपनी मेंटालिटी के वो प्लेयर्स पिक करता है हमेशा, वो जो उसके साथ चले और चलाना उसको बहुत ज़बरदस्त आता है। Abbas Raza Khan with his last delivery this time played towards the offside, but couldn't get the connection that Asad Bukhari wanted, so a dot delivery. और यही कह सकते हैं कि बैड टू वर्स हो ही जा रहा है नाइट राइडर्स के लिए। नाइट राइडर्स आर 30 for 4 आफ्टर 5 overs और फाइज कमर और असद बुखारी द लास्ट टू recognized batsmen. Well, there is Safwan to follow of course. बट यस, चार जब आपके हाफ टीम इज इन द डग आउट ना, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर अ बिग स्कोर। 190 इज़ अ बिग आस्क, और बारिंग द जो सिचुएशन और द विकेट है ना, इट्स वेरी बिग आस्क। और जिस तरह आप 4 आउट हो गए हैं तो फाइज कमर हैज़ टू प्ले अ बिग रोल, और ही हैज़ द एबिलिटी टू डू इट, और आज देखते हैं कि कैन ही डू इट। हसन सरदार आए and he bowled a brilliant ball and Faiz nudged it to the extra cover for single. और दूसरा ऑब्वियसली हम ये भी चाहेंगे कि वी डू नॉट लूज एनी डे, यू नो, डेज रादर, कल और परसों, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन भी है, जिस तरह कि अभी विंडी हो गया है, तो वी वुड सर्टनली होप कि आज के मैचेस जो हैं वो सेफ एंड साउंड कंप्लीट हो जाए, एंड देन ऑब्वियसली वी कैन लुक टूवर्ड्स नेक्स्ट डेज। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी बड़ा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं हसन सरदार, और बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों फायज़ और बुखारी, कि वो ना कोई चांस नहीं ले रहे हैं, बिकॉज जब एक बॉलर ऑन सॉन्ग हो, 3 विकेट्स ले चुका हो, ऑन सॉन्ग हो, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, हाँ जी, जिस तरह उन्होंने पहले बॉलिंग कराई है और
3 विकेट्स ली है, मेरा ख्याल है यही स्ट्रैटेजी है कि इसके ओवर्स को सी ऑफ करके बिल्कुल बिल्कुल बाकियों को टारगेट करें और कुछ निकाल सकें इस मैच में से। बिल्कुल। बस ये होगा कि ये सी ऑफ करते करते सी ऑफ ना हो जाए, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, छठा ओवर चल रहा है, 33 रन्स हैं, वो तकरीबन 5-6 रन्स पर ओवर जा रहे हैं। तो दमीर, हमारी predictions अभी तक तो ठीक हो रही हैं। सरदार बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग हसन सरदार। शाह जी, मेरी और दमीर की प्रिडिक्शंस आज की सही जा रही हैं। हमने प्रिडिक्ट किया था स्ट्राइकर्स एंड इनविंसिबल्स एज द विनर्स, तो अभी तक तो वो हाँ नहीं ऑन कोर्स ही लग रही बिल्कुल 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 हाफ वे थ्रू। हाफ वे थ्रू। Hassan Sardar coming in, steaming in, and brilliant ball. He's going for the appeal, but umpire doesn't give. Sorry, umpire ने नहीं आउट दिया। मेरी अंग्रेजी वहाँ खत्म हो गई थी, क्योंकि जो अंग्रेजी doesn't give that out. I gave that out. Just टाइम पे अंग्रेजी खत्म हो गई थी। अंग्रेजी खत्म हो Just to rephrase that. गई। और हसन सरदार के 3 ओवर हो गए। Will he bowl the 4th over? आई What do you say? थिंक करेंगे उसको यूज यहीं पे। मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए। यही- बाज भाई, और यही लास्ट पेयर है कंसिडरिंग। हाँ बिल्कुल बाज भाई की कप्तानी जो है उसमें वो कर जाते होते हैं ऐसे। अच्छा, 4-4 ओवर मैं करवा क्योंकि देते हैं। हसन सरदार प्लेज फ्रॉम माय टीम LGS, तो उसमें ना जितना मर्जी ऑन सॉन्ग हो ना, हसन सरदार मैंने बड़ी दफ़ा इसने बड़े आउट किए हैं, मतलब ही इज माय। और अगेन एज अ स्वीप, और फायज कमर भी आउट कर दिए, अब्बास रजा खान, और ब्यूटीफुल बॉल स्वीप करने गए। मेन स्ट्रेंथ है इनकी फायज कमर की स्वीप करना, बट यॉक हो गए। रिव्यू ले लिया है फायज कमर ने, रिव्यू और अगर तो ये लिया रिव्यू है, और जो रिव्यू है वो लेके भी चली जा रहे हैं। अगर तो ये रिव्यू स्ट्राइकर्स के फेवर में जाता है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सोच के कि आज जल्दी घर जाके मैं शावर लेके जल्दी सो सकूंगा और कुछ नींद हमें नसीब होगी, बिकॉज वी बीन वर्किंग रियली हार्ड टू एंटरटेन यू to गाइस। entertain you guys and bring this for broadcast to you with our high-tech team in order to entertain the millions and the millions हाँ around जी। the world. प्लम एल्बिडो So international watchers as well. Shout out to Shazeb Ali from Germany. अच्छा, मुझे नहीं पता, समझ लगी कि इन्होंने रिव्यू लेते साथ ही बाहर भी आ गए हैं, तो रिव्यूज आया क्यों किया? मेरा ख्याल फुल टॉस लगा है और रिव्यूज आया नहीं करना चाहिए था। सफवान अभी रहते हैं हाँ हाँ, तो reviews ये आया बड़ी नहीं ही, मैं इनको कहता होता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ एलएमएस, तो थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। शाह जी, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ एलएमएस फाइज कमर है तो मेसी ऑफ एलएमएस कौन है? ये बड़ा मुश्किल जो है ना, आपने सवाल कर दिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट बॉलर्स। फॉर एग्जांपल मियां मन्नान, उसके बाद आफर रजा, फराज आफर रजा मिर्जा, को कह सकते हैं। हिकमत, ये तमाम जो है ना, ये किसी को आप नेमार बना दें तो किसी को आप जो है ना मेसी बना दें। यस, आफर कैन बी वन, बट अभी आफर उस हिसाब से आप तो को तो फिर मैं रिवाल्डो बनाऊंगा। हाँ, ब्राजील वाला। हाँ, या रोनाल्डीनियो भी बना सकते हैं मुझे, जी, जी। लेकिन स्टिल आज दोनों फिर मेसी और रोनाल्डो जो है ना अंडे पे गए हैं, मतलब कुछ नहीं कर सके। Well, we होता है are just sometimes. trying to add in the FIFA World Cup craze as well to our conversation, because that does start tomorrow. So I hope you all are excited for that as well. All But the obviously, I football think the better fans. entertainment is LMS Premier League. But the biggest show on earth सर अब यस, has इट इज to be बिगेस्ट LMS शो ऑन Premier अर्थ, League. बिगेस्ट शो ऑन अर्थ। बट आपको पता है एक बात, जी। एंड ही इज गॉन, बोल्ड। I think असद बुखारी अब असद कहेंगे कि जी बुखारी- लाइट बंद हो गई थी और ये बिल्कुल भी जो है फेयर नहीं, बट ही हैज प्लेड। सो अगर वो लाइट अगर बंद हुई भी है तो ही शुड हैव बैक्ड ऑफ। हाँ, ही हैज प्लेड फुल डिलीवरी और ये बोल्ड हो गए हैं। अब्बास रजा खान भी अपनी 3rd विकेट ले गए। जी, अभी एक रिव्यू हो रहा है यहाँ पे, किस बात का? नहीं, नॉट
नॉट आउट. अच्छा तो वो बोल्ड नहीं था, स्टंप था, confirmation by the third umpire. But why is walking and why the another is coming in? Oh, रिवर्स हो गया है, रिवर्स हो गया है. और अब्बास भाई इनसे की हमें पूछिए यहाँ हम तक complain आवाज क्यों आ कर रही रहे है, हैं? नहीं. अब्बास भाई की वायरलेस से यहाँ तक आवाज आ रही है भाई. थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, लेकिन अब कंफ्यूजन जो है जो क्लियर आउट हो गई भी है. क्लियर आउट कंफ्यूजन हो गई भी है. Knight Riders 34 for 5. किसी ने एक्सपेक्ट किया था ये? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. अब हसन सरदार हैपेंड या हसन सरदार happened. शादी यहाँ पे अगर आप विकेट पे होते और आप सफवान और और बुखारी अनदर रन आउट, और सफवान को रन आउट करा दिया. क्लमजी बिट ऑफ रनिंग. अब्बास खान ने अच्छी कैप्टनसी की कि उन्होंने जो शॉर्ट थर्ड मैन ले लिया था और बगैर देखे, आई थिंक मुझे असद लगता है कि बुखारी मैंने और पॉइंट भाग अंदर ले लिया बड़े। था, पॉइंट का फील्डर था शायद। मतलब हाँ शॉर्ट थर्ड मैन कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं, वहाँ पे लिया हुआ था, लेकिन इतनी क्लमजी मतलब ये इस तरह है कि दे हैव गिवन अप ऑलरेडी. Knight Riders को हाथों में खेल के भाग गए और ऑब्वियसली देयर वाज नॉट नो सिंगल देयर. Safwan had no choice but to come out of the कैन crease. दिस बी द लोएस्ट टोटल? it can be, it's still 34 for 6. The last pair is batting and they Lost. still require 116 more to avoid the bonus. So this might be a 116 huge win. to avoid This the might bonus. be a huge win for the strikers. बिग विन, बिग विन. और जितनी बड़ी हमने टीम कही थी नाइट राइडर्स की इनिशियली, आई थिंक इट हैज स्टार्टेड टू कम क्रैशिंग डाउन आफ्टर दैट फर्स्ट विक्ट्री इन द फर्स्ट गेम. आई थिंक बैक टू बैक मैचेस जो है वो हर किसी के बस का रूप नहीं भी होता एट टाइम्स, बट देन अगेन एलएमएस का फॉर्मेट तो ऐसा ही है. ये तो मुझे 7th ओवर में ही पावर सर्ज नज़र आ रहा है. ये जो पावर सर्ज नहीं है लेकिन, सर जी कह लें. और अब्बास रजा खान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कहते हैं ना पर्थ की विकेट. नेथन लाइन बने हुए और हैं वहाँ. नेथन लाइन एक्चुअली मुझे लगता है ऐसी ही विकेट थी जिस तरह की ये बॉलिंग करा रहे हैं. एग्जैक्टली. केआर ने पता नहीं क्या किया था, या पता नहीं स्ट्राइकर्स ने उनको बहुत ज्यादा आउटक्लास कर दिया था. ये एक कंफ्यूजन बिल्कुल बिल्कुल नहीं केआर की बॉलिंग जो है ना वो आज एक्सपोज हुई है और बुरी तरह एक्सपोज हुई है, और फील्डिंग भी. दे हैव ड्रॉप्ड लॉट ऑफ कैचेस एंड बैड फील्डिंग, फिर बैड बॉलिंग, स्ट्रेंथ जो एरियाज थे वहाँ पे नहीं किया. फिर इन दी एंड हसन सरदार ने जो ऊपर से जो है ना उनको शेक अप किया है, जिसकी वजह से इन दी एंड वो बिल्कुल ही उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे. और बैड डिलीवरी, फर्स्ट बैड डिलीवरी फ्रॉम द स्ट्राइकर्स, गॉन फॉर 4 बाय बुखारी. Raja Balaj is the new man, is the new bowler in. नाउ विल आर दे एक्सपेरिमेंटिंग देयर बॉलर के नए बॉलर्स को लाया जाए. और Maybe. राजा बलाज ने आते ही बहुत तेज बॉल करने की कोशिश की. उनको कोई किसी को समझाना होगा कि वो बिल्कुल प्यार से अगर इस विकेट पे बॉल करेंगे तो उनको काफी परचेज मिलेगा. अभी भी बहुत तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. फुल टॉस को उन्होंने टिप कर दिया है. तो ये अच्छा हालांकि Funny has missed out जहाँ एक और पे boundary ये होनी हवा चाहिए. चल रही है एंड ही शुड हैव जस्ट, अगर वो इसको पूरी तरह खेल देते ना तो आई शुड हैव गॉन फॉर 6. बट अगेन क्योंकि अब पीछे कुछ है ही नहीं. एक और full अगेन toss इट्स थर्ड फुल टॉस. down the leg फिर से. और आई थिंक वर्दी क्वेरी है बुखारी की तरफ से इन ऑर्डर टू चेक के प्लीज हाइट को चेक किया जाए, क्योंकि बार बार फुल टॉस हो रही है और एम्पायर जो है वो भी एक या दो दफ़ा देखता ज़रूर है. लेकिन आई थिंक इफ इट इज़ अ थर्ड इन अ रो विच इज़ क्लोज टू दैट गाइडलाइन हाइट मेजर तो दी भी जा सकती है. और अगर तो अब्बास भाई का एक्सपेरिमेंट था राजा बलाज को चेक करने के लिए, 5th बॉलर चेक करने के लिए, तो आई डोंट थिंक के आगे इसको ओवर मिलेगा.
अगर ओवर देते भी हैं तो ऑब्वियसली बलाज को किसी को समझाना पड़ेगा कि आपने मियां मनान को देखा ही होगा पिछले मैच में, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं इस विकेट पे एक्स्ट्रा। आपने बस बॉल को अच्छे एरिया में फेंकना है और वो खुद ही ब्रेक भी होगा और खुद ही नीचे भी रहेगा। और लेफ्टी के लिए तो एक ऑफ स्पिनर को वैसे ही बड़ा मज़ा आता है बॉलिंग करने में। और एक और फुल टॉस, ये फ्री हिट भी थी क्योंकि पिछली बार नो बॉल दे दी गई थी। कंटिन्यूसली फुल टॉस कर रहे हैं और कोई उनको बताए कि बीच में एक विकेट भी है। वो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बला जाए ना और एक तो और वो ऐसा full लग रहा है toss। पिच पे पानी हो जाए तो वो बॉल को बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार पानी जो है ना वो बॉल भाई एक खराब ना जो हो जाए। विकेट उन्होंने तैयार की, इतनी मेहनत की है, इतने रोलर फेरे हैं और हमने इतनी ज़बरदस्त किस्म की पिच रिपोर्ट करवाई आदिल शाह से, वो इसीलिए करवाई थी कि उस पर जो है वो ठप्पा मारा जाए। जो कि बलाज का दिल नहीं कर रहा। एक और फुल टॉस और एक और चौका या सिंगल लेंगे। सिंगल लिया मुझे है, खुदा की सिंगल। कसम मुझे दामिर की वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है जो दामिर की बॉलिंग है ये देख के। अच्छा ये देखिए ना, इन्होंने क्रैम्प अप करना था और ये फ्री बीज दे दे के उन्होंने जो स्कोर है ना वो थोड़ा सा एकदम से थोड़ा सा वो आई थिंक उनको रैप अप करना चाहिए ताकि सब जल्दी जाएं, सबकी नींद पूरी हो। और 33 पर थे, 34 पे थे। 34 पे 14-15 रन दे दिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं थोड़ी बहुत जो क्लब क्रिकेट खेला हूँ एक बड़ा फिक्रा हुआ करता था कि जब किसी को ऐसे बॉलर को ओवर देना तो अक्सर लोग कहा करते थे वो आ गई मैच लंबा करन। समटाइम्स कहते हैं पर्ची। हाँ पर्ची या आ गई मैच लंबा करन के, यार छेती करो मुकाओ मैच। फिर अब ये देखें ना, अब लेग स्टंप पे बॉलिंग होनी शुरू हो गई है। अब अच्छे सरदार अच्छा बॉलर है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है अपनी लाइन और लेंथ से और आते साथ ही पहली बॉल पे चौका खा लिया। इससे पहले इनके स्टैट्स क्या थे? इस चौके से पहले 3 overs 9 runs 3 wickets। ब्रिलियंट बॉलिंग, और अब ब्रिलियंट 13 ऑफ 3.1। 3.1 में 13। अब ये देखें ना कि विविड बॉलिंग शुरू हो गई है। आई थिंक मुझे तो लगता है कि ये अंडर डबल फिगर्स रख सकते थे अपनी बिल्कुल bowling रखना में। चाहिए इनको। लेकिन अब चूंकि वो 13 रन उन्होंने कंसीड कर दिए हैं, एक थोड़ा सा बेहतर बॉल लेकिन अभी भी थोड़े लेग साइडिश है। असद बुखारी डबल के लिए स्ट्राइक रिटेन करना चाहते हैं और कंफर्टेबली ले लिया असद बुखारी, जो कि अब 38 पे हैं। आई थिंक अगर अभी भी हसन अच्छा, सरदार स्टार्ट करे फ्रॉम मिडल एंड लेग तो वो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग अच्छा, कर रहे असद हैं। बुखारी विल प्ले ऑल द ओवर्स क्योंकि अब 6 आउट हो चुके हैं। दिस इज द लास्ट प्लेयर। तो असद बुखारी खुश होंगे कि वो 50 भी करेंगे तो अंदर ही हैं अपने स्टैट्स के लिए। वेल मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप काफ़ी क्लोजली जानते हैं असद बुखारी को। बिल्कुल बिल्कुल, बट ही इज अ फाइटर। आई मस्ट से ही इज अ He is a फाइटर। fighter. He's one of the notable characters in the LMS for sure. And I have seen him in playing internationally as well. And पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर बिल्कुल, चुके हैं and LMS he has के scored, में। and गेन करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। और वहाँ तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी आउट क्लास होती है। आई हैव सीन हिम बैट, आई एम सीन बॉल, तो वो बहुत ही अच्छी फाइट वहाँ पुट अप करते हैं। स्पीकिंग ऑफ द वर्ल्ड कप, उसकी थोड़ी सी हमें टीम कॉम्पोजिशन के बारे में अगर आप बता सकें। जो वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम जा रही है, इट्स अ ब्रिलियंट टीम और वेल डिज़र्व टीम जो है वो जा रही है JLB की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आई मस्ट से कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स और कंटेंशंस के अंदर है टू विन द वर्ल्ड कप। जाहिर सी बात है वहाँ साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की जो है ना वो टफ़ टाइम देती हैं, बट दिस टीम कैन डू वंडर्स। They have big players like Dogar, Fahim, Bukhari, Mannan, Hikmat, big names. The cream of Pakistan is going. So I wish them good luck. Inshallah, we'll see those matches as well, and we'll pray that Pakistan wins the World Cup. जी बिल्कुल, we are with you on that. सो हसन सरदार ने अपना एक बहुत अच्छा स्पेल कंप्लीट कर लिया है। 18 रन्स दिए, 3 विकेट्स लिए हैं। प्रॉबेबली इनका स्पेल था जो कि मैच चेंजर था। बिल्कुल बिल्कुल, इनका स्पेल मैच चेंजर था एंड ही टुक ऑल दी बिग गन्स। मुराद शाहिद को आउट किया, अली जावेद को आउट किया, फिर उसके बाद शबान अख्तर, शबान को बोल्ड किया।
मतलब उनकी वो स्विंग जो इन स्विंगिंग बॉल थी, हालांकि फाइज इनको बता रहे थे सबको कि एक ही बॉल है इन स्विंग, बट समटाइम्स आपको पता भी होता है, बट वो इतनी अच्छी बॉल इतनी अच्छी लेंथ पे गिर रही होती है, इतनी अच्छी लाइन पे गिर रही होती है कि कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसे अब याद है कि रोहित शर्मा को पता होता है कि शाहीन अफरीदी ने अंदर करानी है या मियाँ वो मोहम्मद आमिर ने अंदर करानी थी, बट स्टिल ही कुडंट डू एनीथिंग। बिल्कुल, वही हुआ है टोटली आज। एग्री। आई थिंक इतनी पेस पे और इतना कंट्रोल के साथ इन स्विंग बड़ी देर बाद एलएमएस में देखने को बिल्कुल, मिला, बिल्कुल। बिकॉज हसन सरदार थोड़ा सा आउट थे सीन से, हाँ लेकिन बिल्कुल, वो हसन सरदार मोस्टली प्लेज थ्रू एलजीएस, और एलजीएस आती है डे लीग में, तो वहाँ पे तो खेलते हैं ये, और ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, और ही हैज शोड टुडे कि हाउ ब्रिलियंट ही इज़। फॉर श्योर। अब अब्दुल्ला फैज़ आए हैं अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट करके। आई मस्ट से मैंने आज देखा है तमाम टीम्स को, स्ट्राइकर्स इज़ द मोस्ट फिटेस्ट टीम of this PL. Young guns, Maz, Abdullah Faiz, Raja Balaj, Raja Raja Hasnain. Hasnain, fit, Bas bhai super fit, उनकी जो यंग राजा नहीं है वो भी उज़ैर। फिट है, राजा उज़ैर भी Raja Uzair. Uzair super fit। तो आई थिंक ये भी एक आई बड़ा थिंक ये मैटर भी एक करेगी। बड़ा रीजन हो सकता है उमर आजम को आज बाहर करने का। हाँ, ये भी हो सकता है। खैर हम तो वो रीजंस ढूंढ रहे हैं कि वो क्यों बाहर हुए हैं, हालांकि वो रिटेन हुए थे, और रिटेन जो प्लेयर होता है बिग गन है वो, बट टुडे द अदर्स शोड कि जी वो उमर आजम ना भी हों तो दे कैन डू वंडर्स। राजा बलाज ने जगह बना ली अपनी बिल्कुल, पे आज टीम में। तो Meanwhile, Abdullah Faiz continuing from around the wicket to Asad ब्यूटीफुल Bukhari. शॉट बाय असद बुखारी, गॉन फॉर, ही इज नॉट टेकिंग सिंगल, कुछ भी नहीं हुआ इस इतनी अच्छी शॉट को इन दी एंड, और is it a कुछ power ना मिले। surge over या वैसे ही नो fielder वैसे की? ही वैसे वो उन्होंने अच्छी शॉट खेली थी। वो आपको पता है कि लेफ्ट का जो पॉइंट एरिया है ना, इट्स वेरी हैवी, जी जी। तो वहाँ पे ना ये रुक देखें गया है। देखें वो बॉल वहाँ पे ना रुक गया है, तो ही इज़ नॉट टेकिंग सिंगल्स। आई डोंट नो व्हाई, बट फुरकान पे शायद उनको यकीन नहीं है। अगेन ब्यूटीफुल शॉट एंड दैट्स गॉन फॉर 4। This time he is very strong on the covers. Or with that shot, Asad Bukhari is on 46 of 29. So the only fighter for the Knight Riders tonight. He is fighting and he will fight till the last ball, and this is how should be done. ये ऑस्ट्रेलियंस को आपने अगर देखा हो तो दे नेवर गिव अप। और गुड बॉल इन्होंने straight to तो, the fielder, इसको कहीं भी खेल सकते थे, थोड़ा फाइन खेलना चाह रहे थे लेकिन straight to the fielder खेला। अच्छा, मुझे तो हर ओवर ही पावर सर्ज लग रहा है इनका, क्योंकि हर थोड़ी बार मैं देखता हूँ सारे फील्डर अंदर आ जाते हैं। प्रैक्टिस अच्छी चल रही है इनकी ना, सारे Power बॉलरों surge को की, हाँ। पावर सर्ज का ना एक एक ओवर दे दे। और Dameer, in the meanwhile, I would like you to put some light on the other. अच्छा, वहाँ पे नेरी कंप आ गई। हैवी नेरी, जिसकी वजह से मैच शायद रुका हुआ है। हाँ जी, थोड़े टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रहे हैं उधर। अच्छा, with that being said, we have entered the 10 over mark, so this is a strategic timeout break. We will catch you back after the break. Stay tuned because we are in for a good finish. पाकिस्तान
So we are back after the strategic timeout break. The Knight Riders are on 62 for 6 after 10. They required 127 more in the last 10. And for the bonus, they need to score at least 151. Furqan Naveed Chaudhary is the one batting out there with Asad Bukhari, who is the lone warrior out there for the Knight Riders on 46 of 30. Raja Talal has been brought on with the ball, and Furqan places it towards the leg side for Asad Bukhari to take the strike and start doing what he was doing before the timeout break. Well, he is being told by his teammates कि 95 होता है. So we can see Asad Bukhari's century tonight. Raja Talal to Asad Bukhari now. Asad Bukhari with a hard swing. The fielder couldn't intercept this one, So 4 runs to Asad Bukhari. which completes his a brilliant 50 as well for him. 31 deliveries, half century for Asad Bukhari. Well, outside the discussion is all about the Dynamites blowing the Avengers away tonight. Exactly the wind, like the wind. Yes, obviously an unexpected result there by the Dynamites. Well, 180 chased inside 15 overs. 15.4 overs, so that was brilliant by the Dynamites. In the meanwhile, Raja Talal has been smashed over the leg side and he's been caught. So Asad Bukhari is the one to be dismissed latest by Raja Talal after picking a beautiful catch towards the leg side by Raja Balaj. And Asad Bukhari is making his way back to the dugout, but hats off to him for a valiant effort. Really stood tall. Only one fighting for the team till the very end. And now it's just curtains for the Knight Riders, as the only man, the last man standing is Furqan Naveed Chaudhary. Please do the needful. So Asad Bukhari has been dismissed and the last man will be Furqan. So the field is back inside the circle. 135 का बॉलर है, 130 का बॉलर है वो. इकराम बहुत तेज है. So Abdullah Faiz has been brought in to clean the tail for the strikers. It will be a huge win for Abbas Raza Khan and team. Good delivery to start off. So well, by referring the tail, I think Bela meant the last cartilage of this tail. Abdullah Faiz looks very fit. He's running in, steaming in rather, and a good delivery. But Furqan can only manage to put his bat on it. भाई महीने की स्क्रीन डाउन है. हाँ जी नहीं. So Abdullah Faiz running in once again. He will be looking to take the wicket of Furqan as early as possible, but he is in no mood to play a shot. He just wants to be focused and block every ball, give every delivery the full face of the bat.
Lafez running in once again. Another full delivery. So Abdullah Faiz to Furkan, his last delivery, and another dot ball. I think we're just playing for the formality of it, because the strikers completely outclassed the Knight Riders with the bat, with the ball, in the field. Everything was perfect from the Knight Riders tonight, from the strikers tonight. Well, if you go down in the dugouts, I think off the field as well. So yeah, the last rides taking place here at EME. So what an exciting day of cricket, Damir. Another day, another day full of exciting games and unexpected results. Absolutely. This is what we love. Unexpected results, peak entertainment. I'm sure all of you cousins are going to gang up on Haider Farooq tonight. Well, For the performance that he's given. You were talking about his confidence before. We call him the Firaun of our family because he already has a lot of confidence, and sometimes we need to shatter him. So I don't know after this game what we can expect from him. I think he'll be sending you a lot of emojis. Yeah, I The think rest of the group. he might even punch some of us. I won't be surprised with the adrenaline in him. For sure. I mean, what a performance. Also, I think hats off to Haris Habib to backing him in the power surge over, and Firstly, to pick him, and then obviously to give him the confidence to bowl in those situations, and then obviously giving him the power surge. that too to someone against someone like Umair Ayub. I think all of the big wickets, Umair Ayub and Ali Sikandar, those aren't like small names, They're like, people have actually paid a lot of money to get them. So we are still waiting for that last wicket of Furkan. Rajat Talal will be bowling his last delivery of his second over, another dot ball. So I think Furkan is in a mood to play all of the 35 deliveries left. Raja Uzair has taken the ball, will be starting his spell. जी Raja Uzair with his fourth delivery and another dot ball. I'm sure Furkan will be playing the last 30 deliveries. I think he has switched to a test match batting. And finally he takes some runs, running back for the second. So the mere a valid stand given by Furkan. Yes, I think The wall.
Would you call him Furqan the Wall if he plays Yes, all the overs? Pakistani Rahul Dravid, if you must. But yeah, I mean, all he can do is just stay out there for as long as he can. Just enjoy the weather, enjoy Play a the. few shots and show the ownership that he has that in him, and obviously he can be given a promotion in the next few games. So I think it's a good opportunity for him to use this time and play a few shots. And Raja Talal starts off with a wide in his third over. Another flighted delivery, another dot ball. Furqan has played 21 deliveries and scored 10 runs so far. I think he is enjoying this type of batting out there. I think he's getting an extended run out there. So in the meanwhile, the other game has resumed. And the Invincibles are right on top of the Legends. They have scored 20 after 2.3 overs. No wickets lost for them so far. They required 96 more from 87 deliveries. And Furqan goes big this time. Will he be taken? So we have come to the end of the game, and the Strikers have outclassed the Knight Riders tonight. The Knight Riders have been dismissed for just 76 runs, and it is a big statement by the Strikers. And I hope you had a lot of fun with the great games that we witnessed and tried to commentate. I think we lost words on most occasions, but I think we are up for the next day 4 at EME, and we will join you when the sun shines again.